Okay, let's wait for 1 minute more and then we'll start. Okay, let's start. So today we have the career session as we have discussed yesterday, and then we'll start accordingly as per the discussion. Okay. So before starting the today's session, what should be the tomorrow's topic? So any suggestion as per like जितने भी topics हमने कल written कर रहे थे, write कर रहे थे. In that case, we'll pick the dark web and all. Okay. So and all means we'll see whatever we can do like other thing. Call spoofing is not comes under the whatever topic we have mentioned or like discussed yesterday. So tomorrow we are going to study about the dark web, and I will try to show some of the practicals on how to use VCC. Not the actual carding, but yeah, I will try to show the use of actual VCC, so virtual credit cards. So on that side. And tomorrow we'll discuss what should be the next topic for day after tomorrow. Okay, so probably day after tomorrow we are going to study about the networks. So some theoretical and some practical things. Networking means like internet. And on another side, the day after tomorrow we're going to discuss about the Bob suit. So Bob suit mainly deals with the OTP and payment bypass as we are dealing in a common workshops and all. तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से होती हैं इन चीजों के. इसके बाद हम बाद में डिसाइड करेंगे. आई डोंट नो लाइक राइट नाउ कि मुझे क्या चीजें बतानी है. मुझे मेरे दिमाग में इतना होता भी नहीं यार. ठीक है. So it's a very interesting or like important session for all those who are like beginners or like intermediate level. So let's discuss further. So before I mention now, okay, we have already taken like okay, those who are totally beginners or like professionals. So I'm just disallowing the chat box. Okay, leave it. Okay, how many of you have already watched my career session on YouTube? Just let me know in the chat box. No. Those who have not watched, they don't have to mention. Only they have to mention those who have not watched that. Okay. Okay, fine. So I'm just writing here cybersecurity. Okay, and listen all these things carefully. Cybersecurity. Right.
And as per my experience and my opinion, I'm just going to categorize this cybersecurity into several categories based on your interest or several domains. So inside the cybersecurity, we have several categories, and you guys need to know like what are those categories and how much information and which certifications we have to get or we have to do for like entering into such categories or such field inside the cybersecurity. And after then, you just have to decide like whether I have to learn this, or what. Okay. So these are like 4 to 5. Let me just write. Maybe. Okay, students are still joining. Maybe like your motto should be to crack the CH and OSCP. So we have a different pattern or a different strategy for those students, CH or OSCP or some certification. I'm just writing a certification. Okay, so this should be your motto so that you are planning to learn ethical hacking or like cybersecurity. Okay, so after this, that particular certification, maybe you're planning to get into IT job. So your strategy or like a style or like your like whatever your curriculum, get into IT job, IT job in cybersecurity. Okay, IT professions or cybersecurity professions, you can say, and these things are interrelated. Okay, so and the last I'll conclude, these things are interrelated because like 70% of these things are needed to get into this, and 30% we just have to explore on some other areas. Okay, next category is that maybe your motto should be to learn bug bounties or to be a bug hunters. So bug bounty I'm just writing here. Okay, and slash I'm writing here black hat hacker. Black hat hacker. Okay, and next category, and after like covering all these categories, we'll discuss one by one, and we'll discuss okay, what should be the first step and from which subject we have to start, and what are the free resources for that, and this certification, how much time it will take, and can anyone like study all these things, like if you belongs to non-technical background or like if you belongs to like math, science or like whatever. Okay, and what are the scope and job opportunities in the cyber world for the freshers or like experienced one. So we'll deal accordingly. Okay. Third category is that maybe your motto or like your motive to learn the cybersecurity to join cyber cell or like to work with the Indian government, or I'm just writing DRDO, basically government. Okay. Basically government. So this should be your motto. So for that purposes, you are just learning. Okay. Next category is that you just want to get into some, okay, in this get into IT job now, I'm just writing another thing, that is a cloud security. That is a separate part of the cyber security, cloud security. That is not actually, I'm not mentioning any kind of post, okay, SOC or something like that. Also comes under this SOC or like cloud security or like get into jobs. So comes under that particular category. And next part, to work in other country or planning to planning for the MSc program or like MS in other country and to work as a cybersecurity professionals either in any of the other country other than India. Okay. So these are some categories I have mentioned. Let me just think any other motive or any other thing. Okay. So just let me know in the chat box if I have missed any particular motive for learning the cybersecurity. After then, we will start like discussing on the procedure and timing and the content. So where to start, how to start. So all those types of questions for each and every category, and how much money you have to invest for that, or like how much time it will take. And after covering all those syllabus contents, we'll discuss about the certification, job opportunities, and the other thing. Okay, a scope for the fresher and all. Okay. Digital forensics is a subject, not a category. Okay. Blue teaming and red teaming informations. Okay, I have written that particular note, that particular question, red teaming and blue teaming. That is a separate thing. So I'll consider, remind me in any upcoming session. Okay, I will take 5 to 10 minutes. Cloud security is subject, exactly. Okay, cloud security actually subject hai, and SOC you can say that is not like comes under the category. Okay, but I have mentioned in the IT or job.
That's why I have just said get into IT job. I have mentioned, okay, cloud security associate. That is a category. So this is the category I have already mentioned. Na? That's why. Any other? Okay, so that means I have mentioned all category. Okay, let's just further discuss about each and every individual. Okay, so finally, uh, I'm just writing level 0, level 0. So these are the subject actually. I'm just writing here subject. Okay, now let's just discuss. So for the very first step now, or as in level 0, what should be your first step to deep down into ethical hacking? And after covering all these subjects now, you will easily understand. So no one can master you, or no one can make you a master or expert in cybersecurity within just 30 days or like 60 days. Okay. 60 days is little bit possible for the intermediate or like professional, but in my opinion, like nothing, like no one can like make you an expert. Okay. So level 0, this is a very beginning level. So if you are like entering into the cyber world, so what's the basic requirement? So any one programming language, I'm writing a C or like Python, anyone object oriented, the basics of programming language. If you're not like good in coding, you're not good in mathematics, just ignore. Okay. And fundamental of computer, because we have an audience of like non-technical background. That's why I'm just covering this. And what's your strategies? So if you are done with level 0, then skip that. Okay, go to the level 1 and level 2 and go on, go on, go on, go on. Okay. So level 0, C, Python, fundamental, that should be your first thing. Okay, so if anyone is asking like, okay, sir, where to study these things? So YouTube is the best platform. You can like search for like any particular teacher. For C, Python, Code with Harry is there, Jennifer is there. Okay, fundamental of computer. Many teachers are there. Okay, that should be the level 0. Okay, let's just come back to the level 1. And those who belongs to the technical background, like BTech or like computer science, they already know about the basics of C, Python, and fundamental. They can directly jump into level 2. Sorry, level 1. This is a level 1. Okay. And those who have not done, you guys have to study at least the basics of that. Okay. Level 1, if I'll talk about, so in level 1, okay guys, wait a minute. Okay, level 0 में क्या doubt है? Sir, if you are doing Java, is that okay? I guess okay, that's fine. If you guys are doing the Java, then that should be okay. Okay. Because why I have mentioned any one programming language basics, because at the time of scripting, or if you're dealing with a like virus making or in a malware subject, so that will help you. Even sometimes if I'm taking the basic scripting classes, so that will need a kind of logics or like a little bit of programming. Otherwise, you guys can directly skip those subjects. Okay, basic scripting, but that is mandatory. Now the second subject is networking. So I have completed na C, Python fundamental, and where to study? YouTube is the best resources. Okay, networking, and this is the 60% ways of ethical hacking. 60% ways, 60% base of ethical hacking, and the very first and interesting subject. Okay. And where to study, sir? So before studying, let's just study. So let's just discuss about the contents and how to study. Okay. And then we will discuss like where to study. I have time limitation, so sorry, Sahil. Join on time. Okay. So I'll share this PDF after this session. Okay. Remind me.
So advanced networking, I know you guys are thinking like, okay, sir, we have studied this subject, okay, we are from the internet or like from Google and all and all. So, okay, that's good. Okay, but maybe if you have like studied now, so like 70% or like 80% you have studied, that will be the beneficial thing. But try to study the networking in a relation with the ethical hacking. Okay, let's suppose what's my style. If you're studying ethical hacking, let's suppose if you're dealing with this particular protocol, okay, HTTPS or HTTP or SMTP. So try to understand after breaking of this protocol, which type of attacks we can perform. Okay, suppose that HTTPS and HTTP relates with the SSL stripping attack. Generally, I am just teaching, and SMTP, POP and IMAP you guys are studying. तो उसके through आप email spoofing कर सकते हैं. So rather than just doing the individual practical, आप study करो and study करने के बाद उसमें practical करो. And in that way आपको networking पढ़ना है. And that's my study. And within like last like 4 years and 5 years में जितने भी students हैं, जितने भी लोगों को मैंने guide किया होगा या पढ़ाया होगा, and that उनके through जो मुझे feedback मिली है, and that's the best feedback and best experience I have. तो इस वजह से बता रहा हूँ. And why sir मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? So there are several resources from YouTube or like from others. You guys can study this networking. But what the like वो कमी खामी क्या जाएंगी? अरे यार बच्चे इतना परेशान करते हैं इतना लेट ज्वाइन करके. तो उसमें कमी खामी क्या जाएंगी? बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग जर्नी, यू नो, दिस इज अ लॉन्ग जर्नी लाइक 4 months और 5 months और लाइक 8 months. कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता. सो इफ यू आर एंटरिंग इनटू दिस वर्ल्ड, हमें वो मोटिवेशन चाहिए. That's motivation is actually a real life hacking, or you can say the black hat hacking. Why I'm just teaching like at least like 50% or 60% of black hat or a real life hacking, because that is actually not related with any certification. That is actually not help you to get into a job. That will actually not help you to get into the cyber cell or to work in another country. That is actually a actual power of a hacker. Okay, and if you're gaining that knowledge, that then that will motivate you, or like आपको वो से इंस्पिरेशन मिलेंगी एंड आप उसमें बने रहेंगे. सपोज लेट सपोज यू आर ए हैकर एंड यू आर नॉट एबल टू डू लाइक वाईफाई हैकिंग, और यू आर नॉट एबल टू हैक लैपटॉप्स और लाइक एंड्रॉइड. कोई भी मजाक उड़ा के चला जाएगा. ओके, हैकरों के पास में बहुत पावर होती है. सो फॉर दैट पर्पसेस आप जब नेटवर्किंग पढ़ रहे होंगे, सो रिलेटेड टॉपिक्स पे आपको प्रैक्टिकल्स करते जाना है. उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और उस तरीके से ही पढ़ना है. एंड दैट्स द रीजंस कि जब भी मैं सब्जेक्ट पिक करता हूँ, सो आई विल चूज द 2 to 3 सब्जेक्ट्स पैरेलली, so that like 1 or 2 classes आपको theoretical मिल रही है, and on the basis of that theory we are just doing the practical. Okay, let's suppose कि आपने उसमें कुछ और चीजें पढ़ी, like आपने FTP प्रोटोकॉल पढ़ा. So like can we make the FTP server? तो हमने FTP server बनाया, and that will enhance our knowledge. So उस तरीके से पढ़ना है. And that's why if you'll ask, okay sir, which platform or from which resources we can study this networking? So in my opinion generally आप NPTEL से कर सकते हैं. NPTEL is like ये अभी कराते हैं, IITs के प्रोफेसर्स होते हैं from IITs college. You guys can learn or and you guys can do all the courses, and those certifications and those contents are more valuable than Udemy, Coursera in any other. Okay, तो यहाँ सब कर सकते हैं. And where to get sir? So in YouTube you guys can search computer network protocol, computer network protocol from ITKGP. Okay, ITKGP. And if not, then if you want to like get some kind of confidence, and that if you want to get some kind of certification, valuable certification, then you guys can like go to NPTEL portal, and every year 2 times they are just conducting this. अरे यार, okay. So initiative by the like several IITs and some NIT, or like list of courses. So this is January to April. Okay, so just search. If applications are still open, then you can apply. Okay, and if not, then in the April month or like March month, you guys can search, and you guys have to give the proper exam in their center, and then only you will be certified from the IITs for particular subject. So not about the networking in ethical hacking or like in C programming or like software testing. You guys can see for the computer science. You guys can share with your friend too. Programming in Java and data structure. Okay, let's just search data science engineer, Python for data science, social networks. Okay, discrete mathematics. So let's just search again. Okay, this time they're just not providing any subjects related to the machines learning. We are just providing
related to the ethical hacking. Let's just search. Wait. Database, data analytics, computer network and internet protocol. This one. Okay. So every years they are just conducting. You guys can attend and you guys can watch and you guys can certified from the IIT KGP. Advanced computer network. You guys can do that. Okay. And another. Let's just. Okay. The chemical engineering. Okay. Sometimes some particular years like 2018 or like 2022, they have just conducted the ethical hacking from the another IITs. Okay. So I'm just searching this link. Sorry, sharing this link so that otherwise directly I'm just sharing this. आप इसमें एक्सप्लोर कर लेना. In English, आधे बच्चे हिंदी बोलेंगे, आधे इंग्लिश बोलेंगे. Sir, give an explanation how to assess and IP address go. So, Filden, right now I have a time limitations and I'm not here to discuss about these types of query. Okay. Definitely I will try to connect for the doubt session or query session जहाँ पे आपके कुछ doubts होंगे. And guys, these students are from Indonesia. Okay, Indonesia के बच्चे हैं, लोग ज्वाइन कर रखे हैं यहाँ पे. इंटरनेशनल बच्चे भी ज्वाइन करते हैं. तो यहाँ तक क्लियर है. सो कहाँ से पढ़ना समझ में आ गया. एंड व्हाट्स द लाइक कॉन्स और लाइक प्रोस यू कैन से आफ्टर लर्निंग दिस. सो कॉन्स आर देयर की एडवांटेजेस क्या है इसके. इन डिटेल और इन डेप्थ नॉलेज यू विल गेट इन अ कंप्यूटर नेटवर्क. बट कई बार होता है ना कि जरूरत से ज्यादा चीजें मिल जाए तो हमारे काम के नहीं होते. हमें सिर्फ हैकिंग से रिलेटेबल जो हमारे मोटिवेशंस पढ़ा है, जो रिलेटेबल्स है, ओनली दोज कंटेंट्स वी वांट टू स्टडी. ओके. सो फॉर दैट पर्पसेस लाइक 80% द कंटेंट्स इज गुड. सो व्हाट यू शुड डू, you have to add that rest of 20% the practical things that you have to add by your own. आपको खुद से add on करना पड़ेगा. इसके लिए सर किस तरीके से होंगे वो कहीं पे नहीं, वो मेरे खुद के बनाए हुए कि आपको नेटवर्क्स में इंटरेस्ट बना के विथ प्रैक्टिकल किस तरीके से स्टडी करना है. लाइक नथिंग इज थ्योरेटिकल. इफ आई टेक 1 or 2 क्लासेस इन थ्योरी ना, तो आपको रिलेशन हो जाएगा. आपको बहुत सारे ऐसे माइनर चीजें नहीं पता होंगी. जस्ट हैव टू डू योर ओन रिसर्च. अब जब मास्टर्स में जाएंगे तो उस टाइम पे करना पड़ेगा. लाइक हाउ टावर वर्क्स, हाउ फ्रीक्वेंसीज वर्क्स एक्चुअली, हाउ मोबाइल फोन्स आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, एंड दैट आर रियली इंटरेस्टिंग. आपने ये देखा होगा ना कि इफ समटाइम्स इफ यू आर कॉलिंग समवन्स एंड mistakenly we just connected with the wrong number. Okay, so what's the fundamental behind that? So all such type of questions जो आपके नेटवर्किंग में डील्स होते हैं. एंड वहां पे आपका जो ट्रायंगुलर मेथड टू ट्रैक द फोन. ओके. एंड व्हाट्स द एक्चुअल मेथड एंड हाउ साइबर सेल इज एक्चुअली ट्रैकिंग द फोन कॉल्स और लाइक सिम कार्ड. So those kind of practical things are comes under the networking. But अगर आपको ये पता होगा तो ही आप उस तरीके से स्टडी करेंगे. Otherwise, if you guys are just referring the YouTube videos or like just the NPTEL, तो वहाँ पे आपको सिर्फ नेटवर्किंग की theoretical knowledge मिलेंगी. You can't like relate in that way. तो आपको इस तरीके से कोशिश करना है कि आप उस तरीके से पढ़ते जाओ. एंड उसके आइडिया के लिए ही यू गाइज आर अलाउड टू अटेंड एटलीस्ट 10 लेक्चर सो दैट आपको पता चले कि मैं किस तरीके से पढ़ने की बातचीत कर रहा हूँ. सो कीप पेशेंस. लाइक विद इन लाइक 8 days और 9 days आई विल ट्राई टू इंक्रीज योर थिंकिंग एबिलिटी, ताकि आप सोचना शुरू करें उसमें. इस तरीके से पढ़ता चलना है सब, तो मोटिवेशन ज्यादा बनेगा. वो बोलते हैं कहावत थी हिंदी में, सॉरी गाइज फॉर द इंग्लिश ऑडियंस, ये कहावत में हिंदी में बता रहा हूँ कि एक लंबे रेस अगर हमें दौड़ना है ना, तो हम ग्लूकोज पी के काम नहीं चल सकते, तो हमें पानी पी के काम चलाना पड़ेगा. और वही चीज आपको सीखनी पड़ेगी. तो पानी में उतना मोटिवेशन आना चाहिए. Okay, so let's just conclude. So after completing of level 0 or like after completion of level 1, and those who are thinking, okay sir, at least like 60 to 80% we have done with the networking, and you are thinking to skip this, you can skip. Okay, if you are able to like and you are ready for the interview and you have done at least some portions, so you can skip. Okay, and level 2 start on Linux. Linux means Linux basics, Linux bash script, scripting I'm writing, scripting, okay, and VAPT, okay, vulnerability assessment and penetration testing. And this is like core subject, and everyone are just providing these contents in the name of ethical hacking. Okay, but not ethical hacking is not only this subject. So what is VAPT? Vulnerability assessment and penetration testing. Assessment and penetration testing. Okay.
This is the level 2. And this subject is highly important because with the level 0, level 1, we are actually going into a core level of ethical hacking. If you know this subject very well, then you are surely able to do the bug hunting, you are surely able to do CES certification, you are surely able to do EJPT, or if you have practiced much more in a like Hack the Box platform or like Try Hack Me, then surely you are able to crack the OSCP exam too. So this subject is highly important. So sir, how to study and where to study for this particular subject? So at first, like give your time for like 1 week or like 10 days for Linux and Bash scripting. This will increase your like confidence with working in Linux OS. डर लगता ना कि what should be the command, and we just have to remember the command. Okay, always don't remember the command, just practice it or like understand how actually those commands works. तो उस तरीके से थोड़ा सा स्टडी करना है. And if we'll talk about the VAPT, so VAPT it's depend, actual VAPT is too large, actually too large. Okay, so if you are studying with the purpose of cracking the CH, then the modules are separate, or like some few modules you just have to complete, like 18 module or 20 modules you have covered, then your VAPT is completed. Okay, further vulnerability assessment and penetration testing is leading to the blue teaming or like red teaming. So those categories are separate. If you are studying proper VAPT, vulnerability assessment and penetration testing, then those two categories are comes under this. Okay, so right now I'm not talking about the red teaming and blue teaming and which kind of topic and which kind of framework and tools we just have to work. I'm just combinedly just guiding you कि VAPT में क्या होते हैं और what should be the topics under the VAPT. Okay, and another question is where to study, sir, VAPT. So specifically, there is no a particular channel or like a particular platform जहां से आपको सारे समझ पाएंगे. From there you guys can thinking like okay we will get all the contents and all the modules in a better way. So nothing. मेरे personal experience में तो नहीं है. Maybe like in particular channel you will get okay this topic or this topic is good, but this topic explanation is not so good. Okay, so what you have to do? So YouTube is a good platform. आप वहां से freely कर सकते हैं, but you just have to find out the modules of VAPT and modules of VAPT, and from each and every modules na topic wise you just have to search in Google or like YouTube or whatever the platform you have and start learning from there. तो इस मॉड्यूल को आप थोड़ा टाइम दो वहां पे, गिव सम टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल्स एंड किसी मेंटर से आप पूछो वहां पे कि सर आई हैव डन दिस इंफॉर्मेशन गैदरिंग मॉड्यूल्स और लाइक इनोमरेशन मॉड्यूल्स और लाइक मैंने मशीन हैक करना इसमें इसमें सब कुछ आ जाता है, लाइक वेबसाइट हैकिंग, टॉप 10 अटैक्स, ओके, और लाइक वायर शार्क एंड मैप, ऑल द काइलर लिनक्स टूल्स जितने भी हम लोन पे हम देखते हैं सारा कुछ इसमें आ जाता है, पासवर्ड क्रैकिंग, हैजिंग एंड हैज एनालिसिस और एवरीथिंग. तो ऑलमोस्ट जितना हमने पढ़ रखा होगा. अभी इसके पहले के बैचेस में VAPT की ले रहा था, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है उसमें VAPT. सो 4 to 5 कैटेगरीज और फेजेस में वो डिवाइड हुए हैं और इसको भी इन सच वे आपको स्टडी करना है सो दैट यू विल रिमेंबर. Sometimes it happen na, you guys are just doing okay brute force attack we have done in DVWA or like you have done the OS wire shark, you have done like let's suppose nmap, okay, but you guys are not able to relate all those things. Like individually आप कोई भी tools कर रहे हैं, ये tools कर confidence नहीं आएगा. You will not get a confidence because you don't have a particular objective or like modules and you are not aware okay where to go. आपको कहाँ जाना वही नहीं पता. So क्या क्या खत्म करना और कहाँ तक जाना वो पता हो. So after completing that, definitely you will get the confidence. So in that way, you just have to study VAPT and how much time it will take to study. So if you have done with this will take minimum an average 15 days. 15 days is enough with 1 or 2 hours of study. For a normal student, average student I'm counting. Okay, for networking it will take 30 days. 30 days. Okay, and for VAPT it will take 45 days minimum. 45 days. Okay, so total, because these 3 levels na, level 0, level 1 and level 2 will make you at least an intermediate level of hacker. And how much time you are like giving to the practice for the VAPT or in a try hack me or like hack the box, सब कितना time दे रहे हैं. So on the basis of that it will decide whether you are a professional or an intermediate level. So level 0, level 1 and level 2 is enough to crack the job with a package of 4.5 to 6 lakh. अगर यहाँ तक आपका बेटर है, मुझे खुद पर्सनली पिंग कर देना. ओके सर, आई एम जस्ट थिंकिंग एंड आई एम कॉन्फिडेंट, आई हैव अ गुड नॉलेज एंड आई हैव सर्टिफाइड इन CH और लाइक EJPT और रेड हैट. सो कैन यू हेल्प मी टू गेट दिस काइंड ऑफ. डेफिनेटली मैं कंसीडर कर दूंगा. इंडिया में बहुत सारे बच्चे कनेक्ट करते रहते हैं मुझे, उनको मैं रिकमेंड कर दूंगा. एटलीस्ट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू दैट अपॉर्चुनिटी सो दैट यू कैन सिट फॉर द इंटरव्यू.
अब इंटरव्यू में आप आगे जैसे परफॉर्म करें, व्हाटएवर विल बी द परफॉर्मेंस, वो आपका होगा खुद का, ठीक है। It doesn't matter like whether you are like taking from the training from our trainer or like from me, it doesn't matter, okay। आपका खुद का क्वालिटी और खुद का नॉलेज होना चाहिए। So 50 days, 45 days it will take. Now this is something like hectic to find out from each and every individual channel and all। So पहली बात तो ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर जस्ट आस्किंग सर यूडेमी और कोर्सेरा से क्या करना चाहिए। टाइम वेस्ट है भाई, टाइम वेस्ट है, मत करना, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। फ्रॉम लाइक ना इवन लाइक सर्टिफिकेशन आर अनवैल्यूएबल, वो उसका कोई वैल्यू भी नहीं है। उससे ज्यादा वैल्यू जो है आपके एनपीटीईएल के सर्टिफिकेट के होंगे अगर आपने एथिकल हैकिंग के कर रखे हैं तो, ठीक है। सो इज दैट क्लियर टू ऑल टिल दैट लेवल 2? और इसके यहाँ तक लोगों को लगता है क्या कि वी हैव डन एवरीथिंग एंड वी आर अ मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, बिकॉज इसके बाद स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट द बग हंटिंग। इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं बग हंटिंग एक्चुअली में, एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग बाय योर ओन। अभी मेरी खुद की टीम, अभी बच्चों को मैंने बना रखा है 3 से 4 लोगों को, एंड आई एम गाइडिंग इन सम सीनियर ट्रेनर्स और लाइक स्टूडेंट्स आर देयर, एंड स्टूडेंट्स आर रेगुलरली विद इन अ मंथ दे आर जस्ट फाइंडिंग 10 to 20 bugs। दे आर गेटिंग लाइक, मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट्स होंगे 10 के और 15 के और 20 के ईच एंड इंडिविजुअल को जा रहा है, दे आर जस्ट वर्किंग इन अ टीम फॉर द बग हंटिंग। सो इतना यहाँ तक आपको स्टडी है तो हैकरों के लिए ना कमाने के लिए ऐसा कुछ वो नहीं करना पड़ता। अगर मुझे मेरे पास पैसा घटा, सबके अकाउंट से 1-1 रुपए चोरी करूंगा, 1 करोड़ के लोगों से 1 रुपए के लिए कोई कंप्लेन भी नहीं करने जाएगा पुलिस में, ओके। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोड रेड गुड और नॉट। सो मैं ऐसे पर्सनली तो नहीं बोलूंगा कि हर सब्जेक्ट से ले या आपके वीएपीटी के लिए सही है। मैंने थॉरली जो है आई हैव चेक्ड ऑल द चैनल्स एंड मुझे वहां पे लगता है कि फॉर सम एरियाज पर्टिकुलरली और सम पर्टिकुलर टॉपिक्स कंटेंट्स आर गुड, अदरवाइज टोटली मेरे को सेटिस्फाइड कहीं से भी उतना ज्यादा कुछ नहीं लगा, ठीक है। यू गेट द जॉब फॉर द पेनिट्रेशन आफ्टर द कंप्लीटिंग टिल लेवल 2, ऑब्वियसली यस कुशिका, definitely you'll get the job after completing the level 2, and any certification is mandatory if you are doing any certification like Red Hat you are doing, or like EJPT or like CH or CH practical, and one another informations I have, don't go individually with the AC council, they will charge like higher amount of, like 50k or 60k or something, okay, just ping me personally or in a LinkedIn, I'll provide you the exam voucher, वो आपको 20k के अराउंड पड़ेंगे। अब 20k में CH प्रैक्टिकल दो और इतना नॉलेज विद द लेवल 2 नॉलेज, एंड टोटली आप प्रैक्टिस करो, इंटर्नशिप करो एंड जॉब में अप्लाई करने स्टार्ट करो। दैट इज द मिनिमम टाइम, आपको आराम से 2 से 3 महीने लगेगा इसको प्रिपेयर करने में, जो भी हमने यहाँ पे बताया ना। सो लाइक 30 days और लाइक 45 days, so 3 months around you are totally enough to crack the CH exam। and for the CH exam some cheat code are there and some sorts of questions are there। I have a list of 100 questions for the CH practical, and for CH theory you guys can go for the exam topics and every question will from there। CH exam topic, CH version 12, you guys can open this। तो इस तरीके से थोड़ा पढ़ना है एंड क्रिएट अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पे कि थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। इंडिया में बच्चे सोए रहते हैं, यार टीचर करा देगा, ये करा देंगे, ऐसे नहीं होते। मेरा माय अल्टीमेट मोटो इज टू इंक्रीज योर थिंकिंग एबिलिटी एंड टू क्रिएट अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैंने बॉगंटी में इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, आप खुद ब खुद वहां पढ़ना शुरू करेंगे। एक्चुअली टीचर का काम ये होता है कि आपको बता देना कि क्या पढ़ना है, आप खुद पढ़ लोगे वो, rather than कि मैं वहां पे स्क्रिप्ट कीड़ी बना रहा हूँ आपको ये कर दिया। स्क्रिप्ट बनाना सीखो उसमें, एंड दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट टोल्ड कि आपको बेसिक स्क्रिप्टिंग सीखना चाहिए, हाउ दे आर जस्ट मेकिंग द स्क्रिप्ट। सो यहाँ पे आप जब जाएंगे ना, so you can see the review like I have passed the CH version 12 on this is the materially valid, and he or she whatever got the 122 from the 125 125 में से 122 आ रहे हैं। so this is a set of 400 question, इसको आपने पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, डेफिनेटली आपके CH थ्योरी क्वालिफाई हो गए। एंड फॉर द प्रैक्टिकल आई विल शेयर लेटर, ओके, मुझे रिमाइंड करा देना। सो मैंने 100 क्वेश्चन बना रखे, बट आप खुद से पहले प्रैक्टिस कर लो, नहीं ये लग जाए डर लग रहा है तो फिर लास्ट में आप उसको 15 दिन प्रैक्टिस कर लेना, खत्म हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा आपके, ठीक है। ब्राउज क्वेश्चंस पे क्लिक करा तो यू विल गेट द एग्जैक्ट क्वेश्चंस, और एग्जैक्टली क्वेश्चंस आते हैं, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं, ठीक है। These are the nmap question, so these are the things I'm just sharing this link too। Okay, all the things guys, just remind me, not right now, अभी वो सब शेयर करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। Arman, you can just search or go visit this particular website, our website,
and ultimately I'm just working for the student, and that's why before like 3 years or like 4 years ago I have just built this thing, and due to time limitation I'm not able to teach and guide students, because मेरे भी कई सारे पैसे गए थे at the time of like engineering. अगर मैं अभी से 7-8 साल पहले की बात करूं, so काफी सारे स्कैमिंग उस टाइम पे चल रहे थे. आई एम जस्ट सीइंग आई वाज जस्ट सीइंग कि इंस्टाग्राम पे ओके एंड्रॉइड हैक कर लो या ब्लैक हैट ये सिखा रहे हैं, सब सब फेक था. मैं मेरी स्टोरी में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है. उसके बाद मुझे पता चला कि इन अ साइबर वर्ल्ड नो सिलेबस, नो बुक, नो टीचर काइंड ऑफ थिंग. यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ. वेट गाइस, फ्रॉम देयर. Okay. So I'm running this company with my vision, and my plan is to create a kind of cyber hub and a cyber school for low economical people at least, so that like they don't have to pay like such kind of like money, like simply only taking 90K or like 1 lakhs. Those who are not able to afford that kind of money, and engineering colleges right now they're just taking 8 lakhs and 10 lakhs, and they are just not able to provide that kind of knowledge, practical knowledge, and the job itself in cybersecurity. So my fight is against that. Yeah, and against the cybercrime. Okay. Right now, and another problems many people are just facing, like if any cyber frauds happens or like cyber crimes happens, and they're just going to cyber cell and they're doing nothing. Okay. So for that purposes, I have just built a cyber division team, and they're directly working on that. After like 1 week or like 10 days, I'll circulate that. So whenever you guys are seeing anything and anything happens related to the cyber crime, okay, you guys can ping those team or directly to me. Okay. मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है, अदरवाइज मैं कर देता हूँ वहां पे. लिंक्डइन वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, लिंक्डइन और इंस्टा. सो लेट्स जस्ट प्रोसीड. और किसी कुछ डाउट इसमें टिल दैट? So this is not a subject, actually a kind of different category or an interest. If any students wants to do these things to earn, उनको जॉब करने की जरूरत नहीं है. अगर अच्छे खासे हैं तो एक एक वर्ग में उनको 20-20 एक-एक लाख लाखों तक मिल जाते हैं उसको. So a simple FIFO level of vulnerabilities, because tomorrow we have the dark web, na? So day after tomorrow, if possible, then I will take a classes on bug crowd account or like HackerBin, how to find out the bugs and how to report the bugs. And in a Bob suit, in a live classes, I will find out the live bugs, like using the Bob suit, and we'll see वो किस तरीके से होते हैं. तो उसमें बहुत पैसे मिल जाएंगे. मैं तो सिर्फ बग हंटिंग में काम करूँ तो मेरे को 4-5 लाख से ऊपर के आएंगे विद जस्ट एवरेज बॉन्टी ऑफ 10K to 15K. 10 वेबसाइट उठाता हूँ तो उनमें से 8 में तो बग्स ही मिल जाते हैं, या 7 में तो बग ही मिल जाते हैं. उनमें से 2 में भी बॉन्टी मिल गया तब भी काम चल जाएंगे. Is it clear to all? Level 0, level 1, and level 2. And after covering all these subjects and labels, we will discuss, okay, which subject or which portion is like more important for that particular category, or more important for this 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 category, or is there is extra add-on for that particular category. So we'll discuss about those things too. आई गेस समझ में आ रहा होगा. हिंदी वाले ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा क्या? देखो सब्जेक्ट्स ना काफी इंटरेस्टिंग है फॉर द हिंदी ऑडियंसेस, बस आपको बेहतर तरीके से उसको समझ के पढ़ते चलना है उस तरीके से. मोटिवेशंस कम नहीं होना चाहिए. जो मैंने अपने 3 साल या 4 साल, आई हैव जस्ट गिवन 3 to 4 ईयर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स कि सारे सब्जेक्ट्स में क्या चल रहा है. ठीक है. पर्सनली कनेक्ट नहीं होता, जस्ट हैव टू गो थ्रू द टीम और लाइक इन लिंक्डइन, और इट्स डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक क्वेरी. बहुत बहुत रिक्वेस्ट आते हैं मुझे, एक दिन में 100-200 से ज्यादा रिक्वेस्ट आते हैं. अभी भी कम से कम 300-400 मैसेजेस पेंडिंग होंगे. So let's just discuss about the level 3. So till you guys have done till level 2 or like up to level 2. Now it's time to gain some experienced subjects, or like time to get some expertise in industry level subjects, you can say. Okay. So level 3, you guys can study the InfoSec, basically information security, okay, and cryptography. Okay. And this is just a level 3. Let me just go to the level 6 or level 7, and then you will realize if anyone is like posting in a Instagram or like any websites or anywhere, like they're just providing, they are just making you an expert in like ethical hacking in just 50 days or like 60 days, then ask them if they're covering these contents or these subjects or not. Okay.
So be aware in the cyber world. So InfoSec and cryptography. And why I'm just saying you or like telling you, okay, सारे subjects आपको पढ़ने चाहिए. You should study all the subject, because after studying all those subjects, then only you will realize which subjects I have more interest in. Okay. So if you think after studying all 5 to 6 subjects, you'll realize, okay, my interest and motivations is increasing in this BAPT, or like in InfoSec and cryptography, or in black hat, or like bug hunting, or in digital forensics and investigation, or in malware and reverse engineering. So on the basis of that, you will get starting your expertise or like experience in that particular subject. So at least I'm just suggesting, as per my experience, सब सारे सब्जेक्ट पढ़ो, all the 5 subjects or 6 subjects you should study. उसके बाद फिर कुछ भी कर लो, ठीक है. And another motto is that if you're planning to pursue some master's program or like interest into cyber cell or to connect with the DRDO, so well in that case आपका experience matter करेगा और उस फेज में आपके सारे सब्जेक्ट की नॉलेज देखी जाएंगी. So sometimes penetration testers are just applying for the investigator or like in a cyber cell, उनका reject आता है application, they got rejected. Right now, I have been invited for the from the Gujarat cyber cell. So why they are just like inviting me? तो इसके पीछे रीजन ये है ना कि इसके 2 साल पहले 3 साल पहले जो मुझे कोई इनवाइट नहीं कर रहा था ना. अभी क्या कि मेरी तो खैर अलग केस है. सो एक्सपीरियंस में काउंट अभी होने लगा हूं एंड माय एक्सपर्टाइज एरियाज आर गोइंग ऑन डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. एंड व्हेन आई एम स्पीकिंग ना, तो कोई भी अटैक हुआ होगा, कोई भी चीजें होंगी, वेदर आई एम कैपेबल टू डिफेंड और लाइक वेदर आई एम एबल टू डू सच काइंड ऑफ थिंग और नॉट, बट आई हैव एन एक्सपीरियंस कि मैं उसमें कुछ तो बता ही दूंगा कि क्या होगा, बिकॉज आई हैव द नॉलेज, at least the basic knowledge in all subject, and expertise in networks, black hat, real life hacking, and digital forensics and investigation. Okay, so for that purposes I'm just saying InfoSec and cryptography. And okay sir, where to study this subject and how much time it will take? So if you are a genuine student and studying genuinely honestly, so it will take 20 days around. These are just rough. Okay, 15 days to 30 days it will take. So this is a roughly a time period with 1 hour or 2 hours each day. Where to study, sir? So either YouTube. I'm not just saying any specific channel, because I have not find any particular channel that is totally good or like I have just impressed with that particular content. That's why I'm just not sharing. But I just suggest ki if you're able to find out the company's modules means Quick Heal company have they have their own modules of like in digital forensics or like information security or cryptography, such that like in Cisco have just shared their modules in InfoSec and cryptography. IBM, okay, so these companies have their own modules in InfoSec, cryptography, or like digital forensics or deep security. Deep security is another subject, okay, that is totally based for the working professional or those who enters, those who actually professionals actually we can say. Okay, so IBM or like Cisco or like Quick Heal, where to get, sir? You just have to find out in a Google or like dark web, wherever you are just able to find out. These are the company, they have their own model. I know, because some of these companies have collaborated with the university and they are just providing some modules to the student in terms of their LMS or like you can say. So ask and contact with those students and those universities and you guys can prepare from there. Okay, those contents are at least 50 to 70% good. Nothing is 100%, even me. Okay, 50 to 70%. Okay, what's the level 3, sir? Level 3, sir. Sorry, level 4. Digital forensics. And always include the investigation. Okay. अभी लास्ट टाइम पे एक फ्रॉड केसेस हुआ था एंड तो केस स्टडीज जब आप पढ़ते हैं ना तो उसमें आपको बेटर एनालिसिस होता है इसमें. एंड फॉर एक्सप्लोरिंग सच थिंग ना डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन आपको इंडिया पे तो बहुत कमी मिलेगा इसमें. तो आप कोशिश ये करना, क्या मैं प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, इस पे मैं अभी ज्यादा बेहतर काम कर रहा हूँ एंड हमारी टीम भी काफी बेहतर काम कर रही. सो ट्राई टू अटेंड और टू अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप वेरेवर इट मे बी. अभी राइट नाउ हो रहे हैं, जो ऑफलाइन आ सकते हैं आप अप्लाई कर सकते हो. 10th जनवरी इज द लास्ट डेट. आपको आप वहां से वेबसाइट से जाके कर सकते हैं. एंड सेकंड ऑप्शन इज दैट इन समर टाइम मे बी वी विल ऑर्गेनाइज, तो उसमें आप ज्वाइन करना ऑनलाइन. So इसमें totally will deal with the case studies or digital forensics with a cyber cell, Ranchi cyber cell. Okay,
So right now like no MNCs are providing, no individual organizations are providing, so वो आपको better exposure देगा. So where to study individually? So अगर आप individually study करना चाहते हैं, so you guys can study the digital forensics from foreign trainer. कहीं पे एक दो links होगा, मुझे सबके लिए remind कराना. Foreign trainer or like, okay, let me just think. कौन से कंपनी का था यार, कुछ तो था डिजिटल फोरेंसिक्स में एक था. ठीक है, मुझे याद आएगा तो बताऊंगा, लेकिन यूट्यूब एंड यूडेमी एंड गूगल्स पे तो नहीं है. ठीक है. फ्यू स्टूडेंट्स हैव डन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रेनर, मैं नाम पूछ के बताऊंगा उनसे. ठीक है. उनका कंटेंट्स जो है थोड़ा लाइक चीप में आपको मिलेगा, ज्यादा प्राइजेस उसका नहीं होगा, एंड आप उससे स्टडी कर सकते हैं ओनली डिजिटल फोरेंसिक्स, बट ओनली द नॉट द प्रैक्टिकल साइड. प्रैक्टिकल साइड बहुत ज्यादा उसमें नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. ऑलवेज फोकस ऑन द प्रैक्टिकल साइड. जैसे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इन्फोसेक एंड क्रिप्टोग्राफी, फोकस ऑन द प्रैक्टिकल साइड. डिजिटल फोरेंसिक्स में यू आर नॉट एबल टू डील एंड यू आर नॉट एबल टू हैंडल द एविडेंसेस. क्राइम सीन पे अगर आपको लैपटॉप ओपन मिल रहा है, कोई सिम कार्ड मिल रही है, how to operate, how to find out those details. Okay, you are not aware about the CDR details and how police are monitoring. तो उन सब चीजों पे आपको आइडिया नहीं है तो फायदा नहीं है, खत्म, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. पर्सनली मेरे को इसमें ज्यादा रिसर्च करने के लिए टॉपिक्स और बाकी सारी चीजें मिले, दैट्स व्हाई मैंने ये फील्ड चूज करा, डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. एंड यू आर सॉल्विंग द रियल लाइफ केसेस ना, जैसे मेरे पास में OLX के फ्रॉड आते हैं एंड बिटकॉइंस फ्रॉड कुछ भी आ गए, या फिर और भी कुछ यूपीआई फ्रॉड्स वगैरह आ रहे हैं. ठीक है, तो उन सब चीजों पे आप काम कर सकते हैं. एंड मैं एक चीज दो चीज आपको बताता हूँ, अभी मेजरली आई एम जस्ट रिसीविंग सो मच केसेस इन यूपीआई फ्रॉड. आपके QR कोड के थ्रू हो रहे, फोन पे के थ्रू हो रहे. एक मिनट गाइस. NCIIPC is the website. You guys are aware about that. आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं in case of UPI frauds, not the financial fraud. NCIIPC or some different. Okay, no, not that. Let me just. NPCI. Okay. Okay, this is a website. So related to the UPI frauds, you guys can complain over there. Okay. And I'm sharing these links. DFIR from EC Council, is it worth it? So specifically, as per the knowledge or like practical side, if you're asking, then personally, I don't like EC Council modules, whatever it may be. But as per the reach or as per the certification, because that is globally recognized and you should be considered. So in that way, you guys can do that. Okay. This one and this one is also a government portal. So if any crimes happens, then you guys can anonymously, for the women and children, there is another section. So you guys can file a complaint. Okay. And after filing the complaint, you guys can send that particular complaint ID or a PDF to our team. We'll investigate further on that, if police or cyber cell is not working on that. So it's depend. It's not sure like 100% we will work. Okay. And another websites, in case of mobile theft. Okay. मोबाइल भी चोरी हो जाता है ना, उस केसेस में आप क्या कर सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स वो जो चोरी करते हैं बेसिकली दे आर जस्ट ब्रेकिंग योर पासवर्ड्स और लाइक फिंगरप्रिंट व्हाटएवर इट मे बी, एंड दे कैन यूज योर फोन. ओके, सो यू गाइस कैन ब्लॉक योर IMEI, एंड इन सम पर्टिकुलर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र और दिल्ली और 1 or 2 states are there. So in you belongs to such states. So in that way, like within 15 days to 1 week, definitely you will get response and make some chances कि आपको जो है फोन मिल जाए. अदर स्टेट्स के लिए जो है अभी हम काम कर रहे हैं, गुजरात और झारखंड में
हम थोड़ा सा इसको एक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं स्टोलन और लॉस्ट फोन के लिए। ओके, सो इन्वेस्टिगेशन साइट मॉड्यूल्स आपके काफी डिफरेंट हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो फॉर दीज आर द हैकिंग यूज इन रियल लाइफ थिंग्स। सो आई हैव नॉट पुटेड एवरी टॉपिक्स बिकॉज मेरे दिमाग में जैसा आएगा उसके हिसाब से मैं पुट ऑन करता हूँ। दैट्स व्हाई इन एवरी सिलेबस आई हैव जस्ट रिटन मेनी मोर टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन द लाइव क्लासेस। ओके, मुझे याद नहीं रहता, मैं नोट्स वगैरह ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ। सो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, आई विल शेयर दिस पीडीएफ जस्ट फॉर द रेफरेंस, बट दीज आर नॉट the all topics. Okay, many more topics are there. आपको खुद से cover up करने पड़ेंगे. For the bug bounty, let's just go on. These are the forensics topics, but these are not enough because every batches or every years or with the passage of time, technologies are increases और जो latest technologies increase हो रही ना, उसके वजह से investigations के भी methods increase कर रहे हैं. Like right now, this is not an updated syllabus. Okay, this is an outdated syllabus. So MD box is there, drone forensics is there. Okay, cloud forensics is there. So okay, cloud forensics is already included. So some topics we have not included. This will take minimum 20 to 30 days. 30 days, 1 hour each. Okay, investigation, for investigation, you guys have to do the internship with that organization or like cyber cell and with the DRDO and such organizations, nothing else. And if you genuinely want to expertise in digital forensic investigation and to work with a cyber cell in a real life cases, so आपको जुड़ना ही पड़ेगा, nothing else, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। And for this you guys can do the CHFI certification from the IC Council. ठीक है, ये एक मिनट गाइस, पता नहीं क्या आ रहा है मुझे, इतने सारे मैसेजेस। ठीक है, ओके ओके, सो लेवल 5 इज malware and reverse engineering. So basically, you guys have seen many mod applications are there, cracked application or cracked software you are using. Okay, so crack कैसे करते हैं, assembly language की need पड़ती है उसके लिए, ठीक है। decompiling कैसे होती है, mod api के GB WhatsApp वगैरह बना दिया, कुछ भी और ऐसे ऐप बना दिया. So how we can do that, okay. And malware आपका एक different side में जाता है. And you, if you are good in only these two subject ना, malware and reverse engineering, and if you have done any kind of project in malware and reverse engineering, then surely I will recommend in JDScale. JDScale is a good company, you can search. एंड वहां पे मेरे काफी अच्छे कनेक्शंस हैं, मेरे भी कुछ जो फ्रेंड्स हैं, मोस्टली दे आर इन लाइक मैनेजर और लाइक सीनियर एनालिस्ट, ऐसे कुछ चीजों में है, ठीक है। सो आई डायरेक्टली रिकमेंड, आप वहां पे इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हैं। वो सिर्फ आपको मालवेयर पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो इंडिया में मुझे एक दो ही कंपनी ऐसे लगती हैं, जैसे मैंने JDScale का एक नाम दिया, सिस्को भी लेती है। एंड एक्चुअली JDScale इज प्रोवाइडिंग द फ्रेशर्स विद अ पैकेज ऑफ 12 लाख starting package. Okay, and if you are good in like level 1, 2 or 0, then you will get only 4.5 to 6. That is the average package I am just sharing. Okay, and you are good in like infosec and cryptography with a great knowledge in networks, then definitely some companies will consider you with just package of 7 to 8. And for like which companies or like what are their criteria, I have a list, but it will take more time and I don't have a time, that's why. So some other days or like some other public session I'll share that. Okay, and अगर आपको ऐसा कुछ आएगा तो आप बाद में query कर देना, मैं Google form put on कर दूंगा. If you want to discuss on any particular point with me, so I'll share. सबका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट लेट्स सपोज कल मैंने किसी से बातचीत करा 10 लोगों से, 5 लोगों से, सो आई विल टॉक विद अदर 5 पर्संस और 10 पर्संस इन अनदर डे, सो इन दैट वे. ओके, फोरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशंस में अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो इसमें कुछ कंपनीज हैं, बट दे विल नॉट गिव यू हायर पैकेजेस. आप साइबर सेट में लास्ट टाइम पे ओपनिंग्स हुई थी, गवर्नमेंट इज इटसेल्फ जस्ट गिविंग द 75 के और 80 के, वो बहुत बड़ी अमाउंट है और वहां पे रेपुटेशंस भी आपको अच्छे खासे बनते हैं. ओके, मालवेयर इन्वेस्टिगेशन डन. Okay, one another subject, some subjects are there. I just like to add on. That is a cloud-based security. Okay, that is actually subject, but that is a different sector actually. Cloud-based security or cloud security. Okay, another one is deep security.
deep security, and I'm forgetting the another name. One another sectors are there. So if you are doing this deep security, okay, this particular training, we can say the industrial training, we can say, and certification or the framework related to like Splunk, SIEM, SOC QRadar, Trend Micro, virtual patching, MBSS, such topics are comes under the deep security to defending the organization. And if you are doing that deep security portion, then you will be counted as an experienced one. So if you are in a final year or like third year, and if you have done this deep security things and you are certified in such particular framework, okay, so definitely try in that those companies, those who are asking for like, okay, 1 year experience or 2 year experience, you can apply. Okay, just ping me, I'll give you the experience certificate if you know such particular thing, and you can directly sit for the interview. Further they will decide what they have to do. Okay, so and another thing, like if you have done the deep security certification in like Trend Micro certification or such like that, okay, आपको भी पता नहीं चलेगा मैं क्या नाम बता रहा हूँ, आप धीरे धीरे सर्च करना है इसमें. So you have an open opportunity to work in another country, in Germany or Canada or like USA, okay, in that particular subject. तो इस पे आपको बहुत अच्छा खासा हायर पैकेजेस मिलेगा. आप अगर अदर कंट्री में सर्च करें, सो आपका ये जो लेवल 2 तक की जो नॉलेज है ना, इसके बेसिस पे यू विल गेट 65 to 70K euro. That means in Indian currency, 50 to 60 lakh at an average for the base. So that's why I'm just saying to the student, आपको ऐसा नहीं बोलूंगा इंडिया के बाहर चले जाना है. You guys can work for at least 2 to 3 years and you guys can explore in other country कि वहाँ की टेक्नोलॉजी क्या कर रही है. If you guys literally want to explore yourself in a cyber world, ठीक है, तो आप वहां पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपकी एक्सपीरियंस काउंटेड होगी, एंड देन अगेन कम बैक टू इंडिया और आप कुछ भी प्लान कर सकते हैं. ये आपके ऊपर है, बट एक बार आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए. ट्राई एटलीस्ट टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड ट्राई टू डू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अगर नहीं हो पाए तो ऑर्डिनरी तो अपन पहले से ही है. एंड एवरीथिंग वट एवर आई एम सेइंग, ये मैंने खुद अपने साथ में करा हुआ है. आई हैव रिजेक्टेड द NIT, आई हैव रिजेक्टेड द गवर्नमेंट कॉलेजेस, आई हैव रिजेक्टेड द पैकेजेस. तो लात मार के उनको कूदना पड़ा एंड देन आई हैव वर्क. ओके, सो मालूम रिवर्स लर्निंग के लिए भी कोई कंटेंट्स नहीं है, ठीक है, इसके लिए कोई गुड कंटेंट एक्चुअली में नहीं है. मैं खुद बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छी, और आई डोंट नो लाइक 40-50% तक मुझे खुद अपना कंटेंट्स गुड लगता है जो हमारे बाकी के ट्रेनर्स मिलकर बना रहे हैं. एंड डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस के लिए बेस्ट जो अभी हम गाइड कर रहे हैं, मुझे लगता है मैं बाकी के मॉड्यूल्स चेक कर लूंगा इंडिया में जो लोग करा रहे हैं. एंड नेटवर्क्स भी, बाकी कुछ कुछ सब्जेक्ट है, कुछ कुछ पोर्शन कहीं ना कुछ कमी खामी रह जाती है. सो दीज आर लेवल 1, दिस इज काइंड ऑफ थिंग. एंड अनदर वन एड ऑन टॉपिक इज क्लाउड सिक्योरिटी और डीप सिक्योरिटी. आई हैव ऑलरेडी एडेड. Now it's time to like focus on the each and individual category. So these are the general category you should focus or you should study, and how to study, where to study, at least little bit idea I have just provided. Okay, if you want to qualify the CH and OSCP certification, then up to level 2 is needed, or some basic portion of some knowledge of cryptography or like infosec you can say. And specifically for the OSCP, after learning the BAPT, you have to practice more on hack the box or try hack me at least for 2 to 3 months and solving the machines, but the knowledge is enough up to level 2 for this. ओके, एज एन स्टूडेंट आपके पास में पैसे नहीं होते होंगे, इसलिए मैंने बोला OSCP वालों से बातचीत कर रहा हूँ. उसका जो दे आर जस्ट चार्जिंग 80 to 85 चार्जेस ना अभी, बिकॉज आई हैव जस्ट कोलैबोरेटेड विद द EC काउंसिल. सो EC काउंसिल, दैट्स द रीजंस कि मैं आपको 20K में CH प्रैक्टिकल के एग्जाम वाउचर तो प्रोवाइड करा दूंगा. फॉर OSCP दे आर जस्ट क्लेमिंग द 52K और समथिंग, तो मैं थोड़ा और डाउनग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर वो 45K तक आते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूशन से वाउचर ले लेना, मैं OSCP को दे दूंगा. आपको ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, 45-50 हजार देना पड़ेगा. इंडिया में यार एक तो ऐसे हम 8-10 लाख रुपए इंजीनियरिंग कॉलेज में लगा रहे हैं, घर वालों को बोला कि 50,000 1 लाख रुपए और दे दो, पहले तो गाली देंगे. तो ये वाले सिनारियो होते हैं, ठीक है. एंड अल्टीमेट गोल और लाइक एक जो चीज मैं हमेशा ही बोलता हूँ, एज एन हैकर डोंट ट्राई टू वेस्ट सो मच अमाउंट ऑफ मनी. कहीं भी पैसा मत दो, ठीक है, जो करना है खुद से करना है, नहीं तो वैसे भी कोई नहीं करा सकता. दूसरी चीजें, गेट इनटू IT जॉब एंड क्लाउड. IT जॉब की अगर हम बात करूँ सो अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, so just focus on this portion, BAPT assessment and penetration testing, and try to certify in CH practical at least. ठीक है, वो भी कंसिडरेबल है. तो उसके बेसिस पे आपको एटलीस्ट 4 to 6 के बीच में पैकेजेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है. हाँ, OSCP का मैं इंडियन करेंसी में बता रहा था, पता नहीं 80-85 हजार है, उससे ऊपर चला गया हो. तो हाँ, उतना लगता है. मेरे पास आया हुआ था उनका मेल, दे हैव जस्ट क्लेमिंग कि 52K समथिंग में करा रहे हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा और डाउनग्रेड करें उसको, नेगोशिएट करेंगे थोड़ा उनसे,
क्योंकि अगर मैं उसमें जा रहा हूँ ना तो मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं कि मैं एक बच्चे करा रहा हूँ, मेरे को हर साल 200-300 बच्चों को कराना होता है, तो इस वजह से कम प्राइजेस कराऊंगा उनको। तो ठीक है, तो गेट इनटू जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा? सो इफ यू आर फोकसिंग ऑन द लेवल 0 और लेवल 2 अप टू दिस, दैट मीन्स यू हैव लाइक prepared for a separate categories of company. इस पे मैं किसी और दिन सेशन लूंगा, like how to make a resume, how to approach an off-campus placement, or like how to approach some organizations or entity in LinkedIn. Okay, इस इनमें एक सेशंस लूंगा मैं. So that will help the professionals or those who are in pre-final year or like final year, how to find out the good internship or a genuine company. उस पे where to apply, जैसे like for other country Glassdoor is there, Stack Overflow is there, you guys can apply from there. Repeatedly वहाँ पे कंपनीज आती हैं, अदर कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं. 50-100 में अप्लाई किया, क्या पता किसी में सिलेक्ट हो ही गए, तो एक्टिव रहना पड़ेगा. दूसरा, if you have more focused in infosec and cryptography, then you have prepared for some separate categories of companies, okay, or different categories of company. For this I don't think so बहुत ज्यादा कंपनी है, so don't focus for the IT job, but you can at least study this. Malware engineering, 2 to 3 companies are there in India. Otherwise, in other country, lots of opportunities are there. Okay, so based on your interest, if you want to interest into the IT job, so that is a average student or like max students are just doing this. BAPT, penetration testing on this, TryHackMe or like Red Hat or like blue teaming or like red teaming or like EJPT, OSCP, such kind of thing. Okay. वो सब ऑलमोस्ट एक कैटेगरीज के कंपनीज में आती है. बॉग बॉन्टी एंड ब्लैक हेट, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द बॉग बॉन्टी. सो बॉग बॉन्टी अगर हम बात करें, सो बॉग बॉन्टी जो है वो आपका यहाँ तक पढ़ने पे आप समझ जाएंगे. इफ यू आर लाइक गुड टिल लेवल 2, देन यू आर टोटली एबल टू डू द बॉग हंटिंग, और उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं. इसका रियल एनालिसिस जो है अगर आप कल बोलेंगे तो हम कल कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने जो है कल डार्क वेब पे डाल रखा है. सो लेट्स सी, हम लोग उसमें अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे. ब्लैक हैट की बात करें, सो ब्लैक हैट हैकर्स आपको कोई नहीं समझा सकता है. पहली बात तो इसको मैं सेपरेटली आपको बताऊंगा कि ब्लैक हैट्स में कैसे करने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं. अभी बताऊंगा तो 20 मिनट लग जाएगा. मुझे कल के सेशंस में टाइम देना. टुमारो आई विल टेक 20 मिनट्स एक्स्ट्रा एंड विल सेपरेटली डील एंड डिस्कस for the black hats, like what are the contents module and where to study, how much time it will take, and pros and cons, advantage and disadvantage. क्योंकि मैं सबको करने के ये भी नहीं बोलूंगा और मैं प्रमोट भी नहीं करता इसको, बट एटलीस्ट मैं गाइड तो कर ही दूंगा अगर जिनको वहां तक जाना है. समटाइम इट्स हैपन ना, सपोज वी जस्ट हैव टू लाइक कैच सम साइबर फ्रॉडर्स और लाइक साइबर क्रिमिनल्स, तो उनको पकड़ने के लिए ना, अगर हमारा माइंडसेट क्रिमिनल्स के जैसा नहीं है और आवर ओन माइंडसेट इज नॉट लाइक द साइबर क्रिमिनल्स, देन वी कांट लाइक कैच. मुझसे किसी ने पूछा था, सर कि चोर का दिमाग ज्यादा होता है कि पुलिस का? मैंने आंसर दिया, चोर का दिमाग ज्यादा होता है. ओके, व्हाई? बिकॉज एक चोर को सारे पुलिस मिलकर पकड़ रही होती है. अगर मैं ये बोलूं क्या कि ओनली वन पुलिस एंड ओनली वन थेफ्ट इज डीलिंग, तो पक्का चोर जीतेगा, उसका दिमाग ज्यादा चलेगा. ठीक है, बट ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेस और अपनी इन चीजों का यूज नहीं करती, या फिर उनके पास इतना समय नहीं है. इतने सारे केसेस, कुछ भी रीजन हो सकते हैं. सो ब्लैक हेट के लिए 20 मिनट आई हैव सेपरेटेड. फॉर साइबर सेल एंड डीआरडीओ के लिए मैंने बताया, जस्ट study all this subject and more focus on the digital forensics investigation, and if possible then qualify with this certification. And specifically for the cyber cell and DRDO government organizations, our certification is also helping, because this is the first Indian certifications we have launched that is actually helping to enter into the government area, that is the EHCCI, ethical hacking and cyber crime investigation. because इसमें हमने जो प्रैक्टिकल साइड जो ज्यादा डाला है, और जहाँ पे जो इंटर्नशिप एक्सपोजर हम देते हैं वो एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होते हैं. Okay, to work in other country, so to work in other country मैंने पहले बताया, you just have to certified in a framework wise, like Splunk में आप certified है, SOC में आप certified है, आप SOC में certified है, you have certified in deep security, Trend Micro, so those certification will help you to get in other countries job. Okay, and where to apply? आप Glassdoor, Stack Overflow से अप्लाई कर सकते हैं. वहाँ पे पैकेजेस बहुत अच्छे खासे हैं, अब अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है उसमें. MS के लिए प्लान कर रहे हैं एंड यू आर गुड, सो आप मुझे पिंग कर देना. आई गिव यू द LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. अभी कई सारे स्टूडेंट्स मेरे ऑलरेडी वहां पे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक और यूनिवर्सिटी ऑफ सालेंड, जर्मनी में है, कनाडा में 1-2 बच्चे हैं, अभी शायद US वगैरह में कुछ 1-2 बच्चे जाने वाले हैं उसमें. इसके लिए आपको यूरोपियन फॉर्मेट में रेज्यूमे बनाना पड़ेगा. तो वो साइड ना, विच कंपनीज आर देयर सर एंड हाउ मच पैकेजेस दे आर ऑफरिंग, देयर रिक्वायरमेंट एंड हाउ टू डू द इंटर्नशिप विद दैट कंपनी, और लाइक हाउ टू मेक अ गुड रेज्यूमे for the selection, how to approach from the LinkedIn and how to like write, and उसमें जो LinkedIn को हम highlight कैसे करें, how to हम make a more connections, तो वो सारी चीजों के लिए जो है we will take a separate session और वहाँ पे बताएंगे. मे बी पॉसिबल तो हम उस दिन जो 20 मिनट्स ब्लैक हेट वाले में, ब्लैक हेट में तो कल भी डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि डार्क वेब कार्डिंग वही आने वाला है.
तो उसमें बता दूंगा अदर टॉपिक्स और कहाँ से लर्निंग वगैरह करना है। इज इट क्लियर टू ऑल या सबके ऊपर ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है? तो लाइक स्कैमिंग में नहीं फंसना है, ठीक है। बाकी इंडिया में जो लोग गाइड कर रहे हैं ना, मुझे मुझे स्टूडेंट के बहुत ज्यादा इनसे कोई मतलब नहीं है कि भाई मेरे को स्टूडेंट से पैसे कमाने हैं। मेरे सोर्स ऑफ इनकम, आई हैव अ लॉट्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन हैकर और एज एन इन्वेस्टिगेटर। सो आप पढ़ना है आप पढ़ो, आई एम रेडी टू गाइड एंड मैंने टीम लगा रखी है वहां पे, सो वो गाइड करने को रेडी है। आप बस पढ़ते जाओ। मुझे एक अलग साइबर रेवोल्यूशन क्रिएट करना है इसमें। लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल टेक। सो इन 25 इट्स एक्सपेक्टेड कि मुझे शायद 100 करोड़ से 200 करोड़ के फंड मिल जाएंगे। अगर वो मिल गया तो झारखंड नहीं, इंडिया के ऑलमोस्ट स्टेट्स में हम चले जाएंगे एज एन इंस्टीट्यूशंस, जो आपको सस्ते चीजों में सारा कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। ठीक है, सो एनी अदर क्वेरीज रिलेटेड टू दिस, अदरवाइज विल वाइंड अप एंड विल अगेन मीट। अच्छा, हमने कब स्टार्ट किया था? आई गेस 8:45 में ना? 10 बजे स्टार्ट किया था, ठीक है। 9:45 में, ठीक है। So tomorrow we have the interesting topic like dark web, and that is actually interesting. All types of like na criminal minded persons are just doing. जितने भी हमने crimes देखे होंगे in South movies role, drugs smuggling, guns purchasing, organs transplant, fake document and data leaks वगैरह हमने सुना होगा। Facebook में डाटा लीक किया, इससे डाटा लीक, कहाँ पे डाटा लीक करते हैं? We are going to see the live and some other portion on carding, like cards कैसे वहाँ पे सेल हो रहे हैं, कौन से वेंडर्स हैं, हाउ टू परचेज सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डार्क वेब, इन सब चीजों पे थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो वो साइड ना मोस्टली लोगों का अनएक्सप्लोर्ड रहता है, एंड दोज हु आर गोइंग टू डीप डाउन इनटू द कोर लेवल ऑफ हैकिंग और अ ब्लैक हैट, उनको तो डार्क वेब में घुसना ही पड़ेगा, वहीं से कंटेंट्स मिलेगा। या आई प्रोवाइड द एलओआर फॉर फ्री, बट आपको कुछ जेन्युइन, आप जेन्युइन निकलने चाहिए। वी विल वेरीफाई एट फर्स्ट, ऐसे किसी को भी नहीं देते हम। नहीं नहीं, फ्री में देता हूँ यार। मैं ऐसे मैं मोस्टली क्लासेस वगैरह फ्री में देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सर इंटर्नशिप में पैसे लगेंगे, पैसे वैसे कुछ नहीं लगेंगे। मेरे पास टाइम मिलना चाहिए बस, मैं वैसे करा दूँ। मेरी जो सपोर्ट एंड कनेक्शन है ना, द थिंग आई एम गेनिंग दैट इज द स्टूडेंट्स पावर। लेट्स सपोज यू आर एंटरिंग इनटू द साइबर वर्ल्ड एंड समडे आई विल कॉल यू, डेफिनेटली विल हेल्प। ओके, सो दैट कनेक्शन है, जो मेरा जो वेब है ना, अभी एक कॉल पे सारे काम हो जाते हैं। दैट इज द थिंग आई हैव अर्नड। तो मेरे लिए पैसे ज्यादा मैटर करता है। एंड इस वजह से हमने B2C पे जो है, बिजनेस टू कस्टमर में, ये सीसाई ट्रेनिंग, इन सब चीजों को अफोर्डेबल रेंज में वो कर रखा है, एंड वी आर प्लानिंग कि हम सारी जगह पे पहुंचे। बाकी किसी का ऐसे कुछ क्वेरी? चलो मैं अटेंडेंस इसको बंद कर देता हूँ। क्या करें? मेरे मानने में ना ऐसा कुछ होता है कि इफ यू आर थिंकिंग लाइक यू आर एक्सपर्ट इन साइबर सिक्योरिटी, देन यू आर ए रॉन्ग पर्सन। और जितनी ज्यादा नॉलेज आपके पास में होती है, आपको उतना ज्यादा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए मेरे हिसाब से। सो जितना ज्यादा नॉलेज लो, उसको शेयर करने की कोशिश करो। मेरे मेंटर्स ने मुझे एक चीज बात बोली थी कि आप इस फील्ड में उतर रहे हो, आप लोगों की हेल्प करना चाह रहे हो, सो डेफिनेटली आपके पास में जो 3 क्वालिटीज होनी चाहिए, वो 3 क्वालिटीज ये थी कि आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए, आप नॉलेज शेयर करना चाहते हो, और आपको नॉलेज शेयर करना आता हो, ठीक है। समटाइम इट्स हैपन ना कि सम आईटीएंस आर देयर, दे हैव द नॉलेज, दे वांट टू शेयर, बट उनको शेयर करना नहीं आता, ठीक है। या कुछ तो और, उनके पास में नॉलेज है बट वो नॉलेज शेयर नहीं करना चाहते। स्टोरी अच्छा मैंने बताया नहीं क्या? कभी को बताएंगे, अभी तो टाइम हो गया, हम कल देखेंगे। जरूरत पड़ा तो 10 दिन के सेशन को मैं 12 दिन कर दूंगा। मैं ही फाउंडर हूँ कंपनी का, मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हूँ, नहीं तो फिर बाकी डायरेक्टर सुनाने लगेंगे मुझे। So how can we connect with needed to get some guidance? So you guys have my public number, so you guys can ping in that particular WhatsApp number, but in that preferred time, ठीक है? In days time और afternoon like 12 PM to 2 PM, और in night आप 12 बजे के बाद करो अगर मैं बिजी नहीं हूँ तो। हालांकि मैं 12 बजे से भी क्लासेस देता हूँ, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, सम मेरे जो कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना, दे आर इन ए कॉलेज और लाइक 3rd ईयर और लाइक 2nd ईयर,
they're just saying, okay, sir, we are like stuck in data structure or DBMS and how to tackle with the college because college is right now वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं. They're just not providing anything in notes, so many contents, and they are वो कुछ भी टाइम भी नहीं छोड़ रहे हैं. मतलब कोई वो कुछ बता भी नहीं रहे, ना इतना टाइम छोड़ रहे हैं कि बच्चा अपने इंटरेस्ट पे काम कर सके. सो हाउ टू डील विद दैट? मैंने बोला एक सप्ताह बैठो सारे कॉलेज में सिर्फ पास होने के लिए. 6 CGPA लाया, 7 CGPA लाया, 7.5 CGPA you have maintained, that's enough. Focus on your interest. मैंने अपने टाइम पे एग्जाम ही नहीं दिया था. अभी तो स्टोरी बताई नहीं मैंने. मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि कितने इतने कम नंबर क्यों आ रहे, फेल हो गए, ये हो गए. मैंने उनको बोला क्या, एट द एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग एंड यू गाइस आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी. दे हैव जस्ट सेड वी जस्ट वांट अ जॉब. तो मतलब मीट मी आफ्टर 4 ईयर. बस इतना बोला मैंने, खत्म. सो दे दो नंबर. मैं बिजी रहता हूँ. आई एम रनिंग बिजी ऑल द टाइम. सो अकॉर्डिंगली करना, और रिप्लाई वगैरह ना हो तो ऐसा नहीं कि मैं एटीट्यूड में या भाव में हूँ. मैं लिटरली एंगेज रहता हूँ काफी. आप 2-3 बार रिमाइंड करा दिया करो, ठीक है? कभी ना कभी तो आ ही जाएगा वो. कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है. अरे अभी अभी मत बोलो यार. अभी मैं लास्ट लाइक वी हैव एन इंटर्नशिप फ्रॉम द 22nd ऑफ जैन, तो उसके वजह से मैं फरवरी तक पूरा एंगेज रहूंगा. एनी अदर गाइज? नेक्स्ट ईयर से शायद, और लाइक आफ्टर 2 to 3 months लेटर वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ स्कॉलरशिप एग्जाम बेस्ड ऑन द एथिकल हैकिंग. सो उनमें जो क्वालिफाई करेंगे, लाइक आई गेस 10 स्टूडेंट्स और 15 स्टूडेंट्स, उनको 5 to 6 मंथ तक जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने बताए ये सारे हम ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ाने वाले हैं. Sir, a short and sweet motivations to make us and concentrate on learning. नॉट अ काइंड ऑफ स्वीट एंड वैसा मुझे तो कुछ खास आता नहीं, लेकिन मुझे एक चीज लगती है कि आई हैव डन माई साइड, एंड जो मुझे डिस्टेंस लेने थे, मेरे डिस्टेंस में मुझे भी काफी सारे डाउट थे इन हिंदी और इंग्लिश. आई एम जस्ट टेलिंग इन हिंदी, ओके? तो जस्ट लेट मी नो. ओके, इंग्लिश. ये अभी कौन से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं? दिस टाइम स्टूडेंट्स आर ज्वाइन. ओके, लीव इट. So as per my experience now, I have taken all sorts of decisions and I am totally satisfied. And in that experience, I'd like to say you have to ready to take the risk and your decision making skills. Okay, sometimes you will feel okay, maybe that the decision will create a kind of like wrong thing, or like you will be redirected or diverted, such kind of thing. Okay, so try to take decisions whatever it may be, like right or wrong. Okay, and if the decision is wrong, again build up, again stand up, and again try to take another risk. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलतियां काफी सारी करी हैं, बट अगर गलतियां नहीं करता तो यहाँ तक पहुंचता ही नहीं. ऐसे ऐसे डिसीजंस ले रखे, आई हैव टेकन सच काइंड ऑफ डिसीजंस कि जहाँ पे ना घर वाले तो मुझे निकाल ही दिए थे, ऐसे भी हुए थे. उस टाइम पे इंडिया में कहीं पे भी साइबर वर्ल्ड का कुछ भी नहीं था, एंड आई एम ए स्कॉलर स्टूडेंट. सो माय फादर जस्ट सेड कि ओके ये यूपीएससी वाला कर लो, यू आर जस्ट प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी, तुम्हारा आईएएस हो जाए, क्या पता हो भी जाता. एंड आई एम एनडी क्वालिफाइड, ठीक है, उधर छोड़ दिया मैंने. तो वहां पे एक डिसीजन मुझे भी बाद में लगा यार कहीं खो ना जाए. उन्हें बोलते, एक विकास देवी कीर्ति सर ने एक डायलॉग बोला था हिंदी में, वो लाइन है कि राहे शोक में हमने एक गलत कदम उठाया, दाउम्र मंजिल तलाशते रह गए. तो ये भी हो सकता था. गिव मी 2 to 3 months शिवम, मैं उस प्राइस को एटलीस्ट 50 to 60 के बीच में ले आऊंगा. इसी काउंसिल का भी ले ही आया, अभी और घटाने में लगा पड़ा हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू डाउनग्रेड द प्राइस सो दैट स्टूडेंट्स कैन इजिली क्लिक दो सर्टिफिकेशन. So syllabus for that scholarship exam,
आप कनेक्टेड रहो लिंक्डइन पे, डेफिनेटली आई विल पोस्ट, और इन बिटवीन दिस 2 months or 3 months डेफिनेटली आई विल टेक सम पब्लिक वर्कशॉप्स, और एवरी संडे एक्चुअली आई एम टेकिंग द पब्लिक सेशन, okay, every Sunday or Saturday, or some guest lectures are there in Slytherin. So I'm just inviting them to share their experience, like they are from like HCL company or like Quick Heal company, and if some students are showing a great potential or interest or like उनके skills शो करते हैं तो वो भी कंसिडर करते हैं। तो मेरे पास अच्छे खासा कनेक्शन है। मेरे तो सारे फ्रेंड अभी मैनेजर और एचआर में हैं, तो उनको ऐसे फोन किया यार इसको जॉब में लगा दो, तो कर देंगे वो, लेकिन मेरी थोड़ी रेपुटेशन है, सो आई हैव टू रिकमेंड सम रियली गुड स्टूडेंट। ओके, चलो और कुछ। दोस्त हमारी ना 12th और लाइक फर्स्ट ईयर ना, उनके लिए मैं किसी दिन और कुछ बताऊंगा आपको, आपके पास में बहुत इनफ टाइम है, सेकेंड ईयर तक एटलीस्ट। जो थर्ड एंड फाइनल ईयर में है आप तो स्पेसिफिक पढ़ो, आपके पास में बहुत कम टाइम है रिगार्डिंग द प्लेसमेंट। बाकी बच्चे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर वालों के लिए उनको बताएंगे। हाउ टू हैंडल योर कोर्स? एट फर्स्ट जस्ट स्टडी 10 days and just learn. Maybe like you will not need any kind of guidance or mentorship. You can study by yourself. अंश आप क्वांटम यूनिवर्सिटी से है ना, वहां तो मैं डेफिनेटली आ रहा हूँ, प्लेसमेंट ड्राइव भी देने आ रहा हूँ आपके कॉलेज में। नॉर्थ साइड के 2-3 कॉलेजेस में आई विल विजिट ऑन लाइक मार्च, तो वहां पे हम 1-2 बच्चों को वहां से पिक करेंगे, 2 to 3 कैंडिडेट। सो डोंट वरी, whenever I'll go there, I'll conduct a particular session for 3 days and 4 days. एंड आप लोग अच्छे से पढ़ो, आप जब फोर्थ ईयर में जाओगे डेफिनेटली आई विल कंसीडर, मैं एवरी ईयर जाऊंगा वहां पे, वैसे भी सिक्योरिटी कंपनी जा नहीं रही है। If so, how is there is any way to know about the ICS? गुरु संजय ना, हाँ गुरु संजय, इस पे मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर्ड नॉलेज तो नहीं है, बट आई हैव ए कनेक्शंस, उनको इसमें बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज है। सो सम डे आई विल ट्राई टू कनेक्ट, बट ये सब कुछ मुझे याद रहे तो, क्योंकि पर्सनली मैं ऑनेस्टली बता ही देता हूँ, जो चीजें मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं हूँ तो उसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, इसके बजाय कि मैं कुछ भी बता दूं बच्चे चले जाएंगे। समटाइम स्टूडेंट्स आर जस्ट कॉलिंग ना, एंड दे आर जस्ट सेइंग ओके सर यू आर जस्ट नॉट गिविंग टाइम। तो यार मेरे पास में टाइम ही नहीं होता है, एंड आई एम स्पीकिंग एटलीस्ट लाइक 2 minutes and 5 minutes ना, दैट्स नॉट माई वे कि मैं 2 मिनट या 5 मिनट उनको बता दूं। समटाइम्स इट्स हैपन कि मेरे 5 मिनट या मेरे एक बातचीत से स्टूडेंट्स की लाइफ डिसाइड हो रही होती, तो मैं कैसे बता दूं 2 मिनट में उनको, तो मुझे आधा एक घंटा बात करना होता है। इस वजह से मैं कोई भी गलत चीजें तो नहीं रिकमेंड, मैं बोल देता हूँ ये मेरे साइड एक्सप्लोर नहीं है, आप खुद से देख लो या मैं कनेक्ट करा के बताऊंगा आपको। Confidence. So as I try to move from the system into the cybersecurity field, please need some guidance on it. Sheikh, आप personally connect करना, I will guide personally. After like checking or like after verifying आपका कहाँ पे क्या जा रहा है, क्या सिचुएशन है उसके बेसिस पे। What time sir? Not now, like within 1 or 2 days I'll ping. So आप वहाँ पे अपने क्वेरी वगैरह अकॉर्डिंगली भर देना, मैं आपको व्हाट्सएप में पिंग कर लूंगा। अरे कितनी बार नंबर दूं? आई हैव शेयर्ड द नंबर, जोसन जॉर्ज, or like in that group now you have connected, check the admin, in any one of the admin you can see like Laksh sir is there. चलो ओके गाइस, तो अब किसी के तो कुछ डाउट नहीं है? आफ्टरनून पॉसिबल, या यू कैन पिंग, आई विल ट्राई टू कॉल बैक इफ आई एम, अगर मैं एंगेज नहीं रहा तो। पता नहीं कल 12 से 2 बजे कुछ मीटिंग ना हो मेरी। चलो तो पढ़ाई करो, अगर आप ज्यादा एक्सप्लोर चाहते हैं तो आप रांची में या दिल्ली पे आप मिलके, सॉरी मतलब मिल सकते हैं मेरे से, मैं गाइड कर दूंगा आपको, और पर्सनली अगर आप ऑफलाइन में मिलेंगे तो आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो कभी ऐसा पॉसिबल हुआ तो आप आ जाना इधर साइड, ठीक है, मुझे पहले पिंग कर देना, 10-15 दिन आराम से रह के जाना, बिकॉज वी हैव अ लॉट्स ऑफ सेटअप फॉर द एथिकल हैकिंग, मैं जो यहाँ पे नहीं बता सकता। तो वहाँ पे कई सारे हार्डवेयर किट हैं, जैसे लाइक आपका, आपने किसी ने पूछा था ना, somebody just asked like sir okay how cyber cell are just investigating and call monitoring and all, okay, hack RF devices and flipper zero, such all types of devices I have, तो उसका अकॉर्डिंगली अभी एक सेटअप यहाँ पे सर्वर्स रेडी करा रहे हैं टू हैक द सोशल मीडिया अकाउंट। ओके, रिमाइंडिंग टू शेयर द PDF। ओके, ठीक है, आई विल फॉरवर्ड द मैनेजमेंट टीम, दे विल शेयर आफ्टर like 1 hour or 2 hours.
ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आप पढ़ाई करो। सर ऑल दिस 6 लेवल कवर्स इन 5 months। यस ऑब्वियसली अंकित, हम ये 6 डन करते हैं पूरा। और इसमें जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, फॉर द मालवेयर डिफरेंट ट्रेनर्स आर देयर, एंड फॉर बीएपीटी डिफरेंट ट्रेनर्स आर देयर, एंड अदर सब्जेक्ट्स हैव देयर डिफरेंट ट्रेनर। 12 PM to 2 PM or like in night, like after 12 AM. Okay. Okay, bye bye guys. So tomorrow we have the interesting session, so don't miss that and be join, don't be late. Okay, timing पे join करना क्योंकि मैं allow नहीं करता फिर।